Yes, we can start. Now we are live. Okay, so Thank you. I was saying first of all, a very good morning and a special thank you to Irani sir for organizing this session. It has given us an opportunity to interact with all the participants. Also, thank you to all the participants who have taken time of their uh, Sunday morning and joined us for this session. I hope we'll be able to add value to you to your financial journey. Uh, I'll be using Hindi and English both. First of all, I'll like to introduce myself and my co-host. Am I audible to everyone? Yes, yes, you are audible. Very much audible. Okay. So I am Raj Mehta, and my co-host is Jyoti Mehta. She's my sister. We both are chartered accountants and finance professionals, and we are into this investment advisory since many years. Uh, Jyoti Mehta is also CFP. Uh, we both have a passion for teaching this subject, and we aim at empowering people in their financial journey and help them achieve their financial goals. We also have a YouTube channel by the name Nanima System, where we post we post videos on personal finance where we explain various concepts. You can check it out after the session gets over. We'll post a link in the chat box. Raj, थोड़ा नजदीक आ जाओ ना. Be near to mic. Be louder, please. Okay. Okay. So is it okay now? Now is it loud? I think it's okay. Ask everybody. Any issue Reena now? ma'am, are you able to hear me? Are you able to hear me? Okay. Okay. अरुण कुमार जी आपको बना रहे. अरुण कुमार जी लिखा था. उनको नहीं आ रहा था आवाज. Is it okay, Arun अच्छा. Kumar? अच्छा. Yes, you Manisha can go ma'am, ahead. Okay, are thank you you, able thank to you. hear me? Good Yeah, morning, go sir. ahead, go ahead. So it's not audible to me. Voice is not clear, sir. Yes, sir. Now is it okay? Is it audible, ma'am? Yeah. Okay. ज्योति Fine. जी, जो भी आता था म्यूट करो. You are called. Yes, sir. Better. Okay. Jyoti, you can mute anyone you want. You are called because there is some noise around. Okay. So I would suggest you can mute all the participants. We'll have a Q&A at the end. Definitely. Okay, very good. We'll try and resolve all your doubts. तो मैं राज जी मैं आपको सबको म्यूट करता हूँ. फिर आपको आई विल गिव यू द राइट टू अनम्यूट. एक सेकंड ना. Okay. Yeah. जस्ट गिव 1 minute. Right. Loudly बोल. Yes, Raj, you can go ahead. Yeah. Okay. Thanks. So what I was saying is that we have a YouTube channel. We have a YouTube channel by the name Nanima System. I'll post the link of that channel in the chat box. You can check it out after the session gets over. We post various videos, various relevant videos on concepts and regulations, latest regulations and all. So it will be helpful to you. You can check it out after the session gets over. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज करूंगा for the benefit of all the participants. So, okay, so we also conduct financial sessions, literacy sessions in schools and colleges. So you can take this for 8, 9, 10 students. We conduct such sessions. Just a minute, I'll share my screen.
Okay, so are you able to see my screen? Yes, sir. Yes. Okay. Okay, so we conduct such sessions in schools uh, and colleges as well. We also conduct such sessions at home. Uh, we feel कि ये पर्सनल फाइनेंस का जो सब्जेक्ट है उसमें जो हैबिट्स जो रिक्वायर्ड है इट फॉर्म्स एट अ वेरी यंग एज. पैसे को सेव करना है, उसको इन्वेस्ट करना है, delayed gratification, all such things will come later on in our discussion. We feel that such habits get developed at a very young age. तो बच्चों को ये इंट्रोड्यूस करना काफी जरूरी है. In my time, there was no such subject in school regarding money management, finance management. बट द गुड थिंग इज कि अभी के जो करिकुलम है, जो 8th 9th 10th के का जो करिकुलम है स्कूल में, उसमें ये सब टॉपिक्स थोड़े बहुत कवर्ड है. सो इट डज सम जस्टिस, बट स्टिल वी फील इट इज इनएडिक्वेट. तो हम काफी सारे स्कूल्स को हम अप्रोच करते हैं और यहाँ पे हम सेशंस कंडक्ट करते हैं and we are getting good response from them. You won't believe that they are they are able to grasp such concepts very easily, and they are very inquisitive about this subject. तो मुझे लगता है कि उन्हें इवन घर पे हमें हमारे अगर बच्चे हैं 10 years and above, we should involve them in all such financial discussion. Okay. Secondly, even for the homemaker, we feel it is important to get understanding about this subject. It will give them more freedom of choice. Okay, so उनको if they are financially independent, they have got more options. They've got more choice. They uh, they don't have to compromise as much. Okay, so we feel, and even they are able to contribute. So if a housewife is able to manage children at home, or even manage the house, so this is not a big deal for them to handle. They are very much capable of handling. So that is why specifically we had mentioned in the brochure that even children and housewives are encouraged to attend. So okay. Um, So we'll start off with the actual presentation. Okay. Okay. So first question I want to ask you, you can write in the chat box. What do you understand by personal finance? What does this subject cover? You can write in your chat box. Anyone? Anything received in cash? Okay. Anyone else? What does this subject cover? Financial literacy का मतलब क्या है? या पर्सनल फाइनेंस में क्या क्या चीज कवर करते हैं हम? आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? Okay. So basically, personal finance covers various subjects. Personal finance would cover your budgeting, it would cover savings, it will cover your insurance related aspects, your investments, your asset allocation, your tax planning, your estate planning, all such things it will cover. Okay. So ये सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाई इज दिस रेलेवेंट टू एवरीवन? ये हमें ये सब्जेक्ट हमें क्यों क्यों सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वेदर यू आर इन अ जॉब और वेदर यू आर इन बिजनेस, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई लॉयर हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो,
you will be earning some income, and you need to know how to deal with that income and deal it in a correct way. For this reason, you need to have understanding of this. Sir, one question I need want to put out. आज के जमाने में money can buy happiness. You agree? Irani No, sir, no. Ira ma'am. Huh? No. Okay. मनी ईरानी सर, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज बोलते हैं ना भगवान, अरे पैसा खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं है. तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. yeah, it is important. It was actually a trick question. Money will not be able to buy you happiness. Money will be able to buy you various comforts in life, various comforts, various facilities in life. Okay, and it will give you freedom. You will, it will give you freedom of choices. Like say for example, if agar mere paas, if I am wealthy, if I am financially independent, I need not work for a boss who I don't like, or I need not work in a job where the work does not give me satisfaction. Okay, तो ये सब choice मेरे पास आ जाता है, which otherwise if I am financially not independent, I will not have any choice. Understand? Similarly, I'll be able to follow my passions. अगर मुझे ट्रैवलिंग का पैशन है, मुझे कोई हॉबी परस्यू करनी है, तो I'll be able to do that. But I'll be able to do that only when I am financially sound, where I have, various plans put in place for my various goals. So money cannot buy you happiness, but definitely it will be able to buy you all the comforts. It will be able to give you freedom of choice, the way you will be able to spend the time the way you want. Likewise. तो इस पे एक ये है, कहावत बोल सकते हैं कि इफ यू आर नॉट हैप्पी विद अ कप ऑफ कॉफी, यू विल नॉट बी हैप्पी विद अ रोल्स रॉयस. तो मनी, तो हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, बट फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज मास्टर कार्ड. वो मास्टर कार्ड का एक एड था, देयर आर सम थिंग्स मनी कांट बाय, फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज मास्टर कार्ड. So we feel it is very important. I'll show you one slide. Okay, so these are some few celebrities uh, जिनको काफी सक्सेस मिली, but because they were not able to manage their finances properly, uh, uh, they were they were in a problematic position later on in their life. So there is this TV all-rounder cricketer, Chris Cranes. So because of some bad decisions later on in the life, he was seen, cleaning bus shelters at some point of time. Then there is this Mike Tyson. He was a boxer, multimillionaire, but due to lavish lifestyle and mindless spending, he became bankrupt in 2003. Similarly, he's Mr. A.K. Hangal, who was a kind of he was a side artist. He had worked in various films, but at the end of the life, he died poor. And this is Sushil Kumar. He won 5 crores in KBC, but he did not know how to manage money. So he made wrong investment decisions. He got into alcohol and everything. His wife left him, and then he was destroyed. And in fact, in this picture, even Amitabh Bachchan at one point of time, his company had become bankrupt. Okay, so money management is quite essential, I feel. Okay, now I would like to invite my sister. She will speak on a few slides, few topics. She'll make you understand some concepts, and then I'll join again.
So over to Jyoti Mehta. Welcome, friends. A very good morning to all of you. Good morning, Am I ma'am. audible? Am I audible Yes, to all ma'am. of you? Yes, ma'am. Good morning. Yes, you are. You are. Yeah. At the outset, let me express my deep gratitude for Haresh Hirani sir for giving us this platform to express our learnings and No, it's my pleasure. try and It's my pleasure. You are some giving such a positive good difference. advice to everybody. Thanks. Yeah, and try and make positive difference in people's lives in whatever small way possible. So I will take you through the very basic concepts which will go a long way in our wealth creation journey. And let me tell you, it is no rocket science. Okay, so let us first begin with the very basic concept, which is saving. सेविंग जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर हम 100 रुपीज भी अगर अर्न करते हैं तो एटलीस्ट 50 रुपीज कोशिश करनी चाहिए कि सेव करें. बट द प्रॉब्लम इज कि हमें सिखाया जाता है कि इनकम माइनस आवर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू द सेविंग. नाउ आई वुड लाइक टू चेंज दिस इक्वेशन अ बिट. एक्चुअली जो होना चाहिए लाइफ में वो है हमारी इनकम, जो भी हम कमाते हैं, कम हो ज्यादा हो, दैट डजंट मैटर. बट इनकम माइनस फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू सेव द मनी इन अ डिसिप्लिन्ड वे. और सेविंग्स करने के बाद जो बचता है वही पैसों का हमें खर्चा करना चाहिए, ये एक्सपेंस होना चाहिए हमारा. मेरी एक फ्रेंड है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ अर्निंग वेरी वेल, but still at the end of the day they are not able to save. The main reason behind this is that their lifestyle, the lavish lifestyle that they live, say 2-3 times eating outside or buying a new mobile phone after every 1 or 2 months. So इसकी वजह से although the income is high, the expenses are equally high और उनका savings बहुत कम होता है. So the first correction that we have to make is that our savings should come first, and whatever left after reducing the saving from the income should only be spent as expense. Okay, now another important fact of life that we all know is that cost of living, which we call inflation, keeps on increasing day by day, which ultimately results in the reduction in the value of money over a period of time. Now this will be a eye opener for all of you. आप देख सकते हैं कि ये 1985 का रेस्टोरेंट का बिल है, जिसमें वन कंप्लीट मील कॉस्ट ओनली ₹26. कैन यू बिलीव इट? एंड इक्विवेलेंट कॉस्ट ऑफ अ बिल इन करंट टाइम is 1,260 rupees. Okay. Similar example is that can anyone believe that a movie ticket sometimes in a good theater costs only ₹1.50? Or train ticket from Pune to Bombay costs only ₹6. A Chevrolet car costs 3,675 only. Okay, so it was an eye opener for me while I was researching on this subject, and I'm sure it would be for you also. तो इससे कहने की बात ये है, समझने की बात ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आवर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होते रहते हैं. तो एक्चुअली देयर इज अ रूल ऑफ 70. रूल ऑफ 70 क्या कहता है कि अगर हम इफ वी डिवाइड 70 बाय द करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच इज से अराउंड 7%, तो 70 डिवाइड बाय 7% विच इज 10. तो इन 10 years हमारे पैसा की द वैल्यू ऑफ मनी कीप्स ऑन रिड्यूसेस बाय हाफ. सो इट इज नॉट जस्ट इनफ टू सेव द मनी. तो हम मनी सेव करते हैं मगर अगर तिजोरी में बंद रखते हैं उसका तो उसका कोई फायदा नहीं. आफ्टर एवरी 10 years आपके वो 1 लाख की कीमत आधी होके 50,000 हो जाएगी. कहने का मतलब ये है कि जो चीजें आपको 10 साल पहले 1 लाख रुपए में मिलती थी, आज वही चीजों की कीमत से 2 लाख हो गई है, या यू विल बी एबल टू बाय हाफ
the purchasing power of money has reduced. और ये हम डे टू डे हमने सभी ने एक्सपीरियंस किया है. When I was a small child, we used to get bread for only 2 rupees 50 paisa, packet of bread, which now costs around 50 rupees. And I'm sure हम सभी ने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है, be it education cost or medical cost or simple day-to-day living. So I'll come to my next concept that we should. It is not only important to save, but it is also important to invest. अभी इन्वेस्ट कहीं पे भी करेंगे तो नहीं चलेगा. हमें इन्वेस्ट ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पे हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है, जिसमें जो हमारी उसमें से अर्निंग मिलती है हमें इन्वेस्टमेंट से, इज ग्रेटर देन द इन्फ्लेशन रेट. तभी हमारी एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन हो पाएगा. नहीं तो एक्चुअली इफ यू सी द वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर वेल्थ डे बाय डे. तो फॉर वेल्थ क्रिएशन, फॉर आवर वेल्थ टू ग्रो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्ट करें उसका रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके, अभी एक स्टोरी है. देयर इज अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, जय एंड वीरू, बोथ ऑफ सेम एज. Both of them started earning at the same time. Okay, Jai started investing rupees 5,000 per month at the age of 21. And for some reason, he stopped investing at the age of 31. So he actually invested only for 10 years. So for 10 years, at the rate of 5,000 per month, it is 60,000 per annum, and which is 6 lakh rupees over a period of 10 years. इन कॉन्ट्रास्ट वीरू ने सोचा कि अभी अभी कमाना स्टार्ट किया है, पहले तो पैसे स्पेंड करते हैं, महंगी महंगी चीजें बाय करना स्टार्ट कर दिया. एंड ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग द सेम रुपीज 5,000 एट द एज ऑफ 31 and continued investing till he was 60. So as a matter of fact, he started investing. He actually invested for 30 years. So over a period of 30 years, his total investment was 18 lakh rupees. Now I would like you to comment on the chat box that at the time of retirement, when both of them were 60 years of age, किसने ज्यादा wealth accumulate की होगी? Can someone tell me on the chat? No, the first guy. Yeah. The first guy. Yes, yes. Someone has said Viru, someone has said the first guy, that is Jai. Yeah, many of you have given the correct answer. Let us see. Actually, you will be surprised that at the time of retirement, Jai could accumulate rupees 4.12 crores, whereas Viru accumulated only rupees 1.73 crores. Jai accumulated, I say, almost 3 times of what Viru accumulated. अभी इसका रीजन क्या है? जय ने तो कम समय के लिए इन्वेस्ट किया था और वीरू ने ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट किया था, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था. तो व्हाट कैन बी द रीजन? Compounding, ma'am, compounding. जी सर, you are very right. Compounding. Yeah, the magic is, जैसे सर सिखाते हैं in his magic book, the magic is start early as early as possible. This works magic in life. Our legendary investor Mr. Warren Buffett has said that he started his investment journey at the age of 11 and still he considered that he was late. So start early माने the day we start earning, we should start saving and we should start investing in the right way. Okay, now many of us would be familiar with this formula. Actually, can you tell me what this formula is for? We have all studied it in school. Yes? Yeah. It's nothing but the Compounding interest. Yes, you are right, sir. It is nothing but a compound interest formula, which we can understand it as a wealth creation formula, because wealth creation is nothing but the magic of compounding come into play. Okay, now in this formula, if you see P is the initial amount, that is our investment.
R is the rate of return that we earn on the investment, and T is the time period for how long we stay invested. हम कितनी देर तक वो इन्वेस्टमेंट में जमे रहते हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हमारा जो फोकस है वो केवल आर पे रहता है, द रेट ऑफ रिटर्न. जब हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है और हम प्रोडक्ट कंपेयर करते हैं कि किसने करे, तो हम ज्यादातर यही फोकस हमारा रहता है कि किसमें हमको ज्यादा रिटर्न मिलेगा. जो प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं. बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज टी. What is T? T is the time period, because this gives you exponential growth, and this is the factor which results in compounding, and this is the factor जो हम काफी टाइम इग्नोर करते हैं. तो जितने लंबे समय तक, पहले तो हमें वी शुड स्टार्ट अर्ली, और उसके बाद जितने लंबे समय तक हम कंटिन्यू कर पाते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट, उतने समय तक अपना कंपाउंडिंग ज्यादा होता है, which my brother Raj will explain in much more detail with facts and figures. Now, the famous scientist. मैम बट जय ने, हाँ जी, एक्सक्यूज मी, बट जय ने आपने बोला ही नहीं कि उसने कंटिन्यू किया था. नहीं, जय ने, मैंने बोला ना 10 साल तक ही कंटिन्यू किया था. बट उससे जो पैसा जमा हुआ 10 साल में, उसका जो पैसा हुआ वो वीरू से 10 साल के पहले. so this is what the difference is ना सर, that उसने 21 से 31 तक ही केवल 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और जो पैसा उसका जमा हुआ that stayed invested. He stayed invested. Sorry, I did not say that he stopped investing. तो मतलब he remained his money. ऐसा नहीं है. जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया था, he continued with the investment. अगर वो इन्वेस्टेड है फिर तो कंपाउंड हुआ होगा, अगर इन्वेस्टेड नहीं है तो नहीं. जी सर, या you are very right. मैडम, Albert Einstein has said that compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it owns it, and he who doesn't pays it. So we are all here to understand it, and I hope everyone has understood. Now there is a Chinese bamboo story. Okay. मैडम, the crux is to be remain invested. भले 10 साल क्या होते हैं, but he was invested till last. Yes. He didn't remove. Start Okay. early and you have to remain invested. That same concept we can understand from this Chinese bamboo tree story. उसमें हम देख सकते हैं कि पहले 5 साल में वो बाम्बू का जो शूट होता है वो खाली इतना ही ग्रो होता है, इतना ही ग्रो हो पाता है. बट इन द नेक्स्ट 6 weeks इट ग्रोज टू इट्स फुल लेंथ. तो अगर ये पहले 5 साल में कोई somebody is impatient, कोई देखता है कि इसमें तो मुझे कोई रिटर्न ही नहीं मिला, ये तो ग्रो ही नहीं हो रहा है, मैं अभी इसको काट दूं, किसी और कोई और पौधा लगा दूं, तो उसको जो ये ग्रोथ मिला है, जो बेनिफिट मिला है ग्रोथ का, वो नहीं मिल पाता. सो एज सर राइटली सेड, it is just not important. It is not only important to start early, save, invest, start early, but also to stay invested and have patience. Stay invested for a long time. No, ma'am, I have one question. How is that bamboo related to our topic? Bamboo is related to our topic, like, sir, we can understand that the bamboo sapling is like our investment जो हमने किया है. तो जो अगर इन्वेस्ट हम करते हैं, अगर पहले 4-5 सालों में हमें तो आदत है, अभी तो पीपल आर, जो हम आज की जनरेशन है, जो जेन जी दैट वी कॉल, उनको तो क्विक बक्स चाहिए, जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए. I got your point. So it is related in a way that अगर वो हमारी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है वो पहले 4-5 साल में कम रिटर्न देती है या इतना ग्रोथ नहीं दिखाती है, तो वी शुड नॉट स्टॉप इन्वेस्टिंग, और वी शुड नॉट से दैट वी विल रिमूव द मनी फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्ट समवेयर एल्स. ओके, सो इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू स्टिक, हमारा जो कंडीशन है, एसेट एलोकेशन है, वी शुड स्टिक टू दैट, एंड we should stay invested for long term, because it is only through long term investing, it's our strong belief, it is only through long term investing that a long term wealth is created. So does that answer your question? No. See, what I'm trying to... if I may intervene, basically मैडम ये बोलना चाह रही हैं कि हमको हमेशा इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना है, ना कि शॉर्ट टर्म. Correct sir. No, I understand that. I understand that. On the same line, what I'm saying is, it is not that like, you wait for 5 years, it doesn't grow, then you come out and then it grows. It's just like it can happen every year or every 2 years also.
It's not just about Yes. 5 years, right? No, it is just a small example, sir. It can Real happen life anytime. example See, the point जिसे हम is, relate कर सके. see, the हमें point पता is नहीं that, है. Yes, see, the sir. point is where to invest in the long run. It is not about 5 year or 2 year or 1 year, right? Correct. This is what you Correct, mean to sir. say, right? Yes, sir. It's not Very just a true. 5 year for bamboo. It's not like that. No. It's very. You are very true. It is for a bamboo tree example I just gave, that we should be patient with our investments and invest for Can as I long say as something possible. here? Yes, sir. Jyotima, can Yes, I sir. say, just like a Yes, sir. bamboo tree Hmm. is growing within and then it expands immediately. Same with the Correct. money will grow very slowly initially. And because I remember they have written that Warren Buffett earned at a very later stage, huge earning, came very later. He was earning every year, but एकदम blast हो गया last में. So this is what you want to say? Yes, sir. The Warren Buffett का अगर हम देखें example, the 50% of his wealth was made after he reached age 90. That is what he says. So the learning हाँ बस वही बोलता था. Okay, thank you. हमारा learning ये है कि हमें invest long term के लिए we should stay invested. Only then we will be able to get the benefit of true wealth creation. So basically we should give time to the market. तो जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं हमारे पास जो अमाउंट होता है, मनी होता है, वो लिमिटेड ही होता है. किसी के पास भी अनलिमिटेड मनी किसी के पास भी नहीं होता है. And especially when as a young student or as a young person who has just got into a job or started earning, so money is always limited. But we have to make use of the time in our favor. One is investing in terms of money and is investing in terms of time. Jyoti ma'am, Yes, sir. एक मिनट. One great example, if I remember, it is right if you think so. वो चेस का वो राजा पूछता है क्या चाहिए आपको, एक आदमी बोलता है Sir, we will एक come to जरा it. फिर डबल करते रहो आपने. Correct. Sir, we will come to it. We have a short story which we will be showing it to all of us, Okay. all of you. Okay, so before that, what I was trying to say was that we can invest in time, which is possible for all of us. We can invest in time by just starting early and staying invested for a long period of time. Now, I would come to the next good concept, which is that of delayed gratification. अभी उसका मतलब सिंपल है कि अगर कोई चीज है, सपोज मुझे वेकेशन पे जाना है, तो या मैं अभी जाऊं या 10 साल बाद जाऊं. That is the decision we face in our everyday life and each and everything and the decision that we have to take. Now, there was an experiment conducted by Stanford University. It is known as marshmallow experiment. इसमें children of age 4 to 5 years were offered one marshmallow और उनको कहा गया कि अगर आप इसको अभी खा लेते हैं तो you can very well eat this one marshmallow, but if you can wait for next 15 minutes, you will get 2 marshmallows. अभी कोई बच्चे इतने ऐसे थे जिनसे रहा नहीं गया, they couldn't resist और उन्होंने वो एक marshmallow खा लिया. Some children thought it was wiser to wait for some time and get 2 marshmallows, and that is what they got. Same group of children were reviewed and interviewed after around 30 years, और ऐसा पाया गया कि those children who could resist the temptation of eating that one marshmallow and could wait for that 15 minutes were much more successful in their life than those who gave in to the temptation and had the marshmallow right away. So इसमें एक ही चीज what I want to emphasize is that कि हो सके उतना we should stay away from taking loans and gratifying our needs and try and wait till the time we accumulate enough amount so that we can get better things in life and accumulate a significant amount of wealth. It is rightly said that good things come to those who can wait. Now, I would like to summarize the basic principles जो मैंने बताया. First is the importance of savings. We should correct the equation to income minus savings and spend only what is left after doing the saving. और आजकल तो ये बहुत ही इजी हो गया है. If you start one SIP, तो ऑटोमेटिकली जैसे इनकम आती है पहले वो डिडक्ट हो जाता है और इन्वेस्ट हो जाता है.
एंड जो बचता है उसी में से मुझे मेरा खर्चा मैनेज करना है. सो इट इज अ वेरी गुड वे. Second thing, it is not only important to save, but it is equally or much more important to invest. Invest in such a way or in those products जिसमें हमारा rate of return is more than the inflation rate. Then we understood the benefits of starting early and the benefit of long-term investment. Then we understood the magic of compounding with that compound interest formula and how time factor plays a much more important role in helping us to create huge amount of wealth. And then in the end, we learned about the habit. It's a very good habit of delayed gratification. Now, as Harish sir suggested, we would like to show you a small story which explains this concept of compounding in a very nice way. So, allow me to share that story with you, and I'm sure everyone will be able to understand. Can everyone उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए. can everyone see the screen and listen to the audio? Yeah. Yes. Yeah. Thank you. इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया. राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी. वाह 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 वाह. राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा. कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया. बस इतना ही? राजा ने पूछा. सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हां महाराज. तो फिर ऐसा ही हो. दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए. पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8. इस तरह वो रखते गए. जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े. 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई. आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई. जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई. आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा. और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी. कहानी की सीख: चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए. So, I hope you understood the message of the. Beautiful. Nice. So, okay. So now I will continue for the remaining part of the session. Okay. So now coming to specifics, I'll be explaining all these topics, and I'll also show you various data points. So we'll cover all these topics such as the budgeting, your insurance, your goal planning, your debt management, retirement planning, savings and investment. So
all these topics I'll be covering. So now goals. So one needs to have goal, be it on the personal front और ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट. जैसे हमें लाइफ में गोल्स, जब हम छोटे थे तभी हम हमारा ये गोल रहता था कि बड़े होके डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है. तो उसी तरह से हम हमारी प्रिपरेशन करते थे. तो सिमिलरली जो ये फाइनेंशियल गोल्स रहते हैं उसके लिए भी हमें गोल्स लिखने पड़ते हैं, हमें सेट करने पड़ते हैं. और उसी एंड वी हैव टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली. So goals have to be in a certain way. The characteristics of the goals, उसको smart goals बोलते हैं हम. S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, and T for time. So goals specific होने चाहिए. मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि भाई I want to be wealthy. That is not a goal. That may be a wish or a desire at most. It is not a goal. लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि भाई बाय द एज ऑफ 60, बाय द टाइम आई रिटायर, आई नीड टू हैव 50 crore rupees as my retirement cost, then that is a goal, because that is specific, that is also timely. Like say if I am 35 right now, तो मतलब 25 साल के बाद मुझे उतना कॉर्पस चाहिए, so it is timely. मैंने टाइम स्पेसिफाई कर दिया है. Is it realistic? Yes, it is realistic. We'll come to the calculation later on. लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि भाई से मुझे by the age of 60 मेरा 5,000 crore मेरा कॉर्पस होना चाहिए, तो maybe that is not probable, that is not realistic. So it has to be realistic, it has to be achievable on similar line, and it has to be measurable. मैं measure कर सकता हूँ. So it should not be a wish, it should not be a desire. It should be specific, time bound, achievable goal. तो क्या क्या गोल हो सकते हैं हमारे ये सारे गोल्स हो सकते हैं. फाइनेंशियल गोल्स वी आर टॉकिंग अबाउट, कि बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का मैरिज, देन बाइंग अ हाउस, रिटायरमेंट फंड, बाइंग अ कार, गोइंग ऑन अ वेकेशन. तो ये सब गोल्स हो सकते हैं हमारे. और हर एक गोल के लिए हमें स्पेसिफिक एलोकेशन करना चाहिए टू मीट दैट गोल. Hello, Mr. Raj, I have a question. Yes, sir. See, it is my question regarding that movie you just showed. Okay, so my question is, see, it is a very basic concept that you can make good money in the long term, right? But the point is, as of today's being well educated and being smart in the society and everything, right? Correct. So one needs to stay rich as well, and say smart enough to have a good money in the long run, right? Correct. So if I get money after 60 years or 70 years, Correct. I'll not be in a position to enjoy that money, because it's all about at the time. So see, my question is, let me complete my question. My question is how to have a good balance of staying rich in a controlled manner, in a wise manner, and also invest some decent amount of money to have a good money in the long run. So that's what I'm trying to say. Yeah, so exactly, the very important word you mentioned in your question is balance. Having correct balance. तो अगर मैं ये सोचूं कि मैं पूरा अभी मैं इन्वेस्ट करते जाऊं और एट द एंड ऑफ 60 years और 70 years मैं वेकेशन पे चला जाऊं, you will not be in the position to enjoy that vacation. So that is my question. Let's say so one needs to have a balance. आपकी priorities क्या है, that you need to define. जैसे कि हमने delay gratification की बात की अभी. Next, like say it is your state of mind. Okay, now say you have two options कि आपको locally से इंडिया में कश्मीर में वेकेशन आपको करना है या स्विट्जरलैंड में करना है. No, let me rephrase my question. My question is, see, in a normal day-to-day inflation, everything in India, let's say, everything is relative, right? So what I meant to say is, to maintain, to have money for saving in the long run, and also to have enough money to spend wisely in the present time, right? So my question is, what should be our strategy? That okay, a guy should make this much money in a year, so that he can have enough money for long-term savings and also for day-to-day. We'll come to that
सर हियर देयर इज वन मोर पार्ट टू द इक्वेशन. अभी इसमें आपकी इनकम आप जो बात कर रहे हो उसमें इनकम की बात आ जाए. So now income is your active income is dependent on your skills. आपके पास क्या स्किल सेट है. नहीं राज इतना- राज एक मिनट, इनका क्या पूछना है कि हम जो मेरा एक एक्सपेंस है 1 लाख का, तो 1 लाख के हाँ. लिए मुझे कितना बचाना पड़ेगा इतने साल में, क्या करना पड़ेगा? Exactly, we'll come to that. वो मैं आगे Okay, गोल्स में कवर okay, करूंगा. I'll cover everything. Don't worry, I'll cover everything. इसे that is why मतलब I Thanks, suggested कि भाई भी Q&A हम लास्ट में रखते हैं. Most of the doubts will be covered नहीं, during the presentation. okay, to help you to answer my question, let us say कि भाई day to day देखो क्या होता है ना कि as you said, if you don't have a goal you cannot score, right? Correct, So we correct. need to have a goal. We should need to have a financial goal every year. Correct, Let's say correct. somebody at the age of 30, Sir, I'll come like to it. he should I'll be come to earning, it. let's say 30 हम lakhs, 40 देखेंगे lakhs, right? Yeah. sir, you wait So for my 10 question minutes. is, to नहीं save मनीष money क्वेश्चन for बाद में long लेते हैं, term. इनको क्लियर कर दो मनीष, वी टेक आफ्टर, लेट मी फिनिश फर्स्ट, वो रह जाएगा, Okay. विल टेक इट. Okay. We'll Okay, cover all the queries. Don't worry. We'll cover Yeah, all the yeah. queries. अगर इसमें कोई चीज कवर नहीं हुई तो we'll definitely resolve it at the end during the Q&A, क्योंकि ये आगे काफी सारी स्लाइड्स है. We'll come to it. Okay. So ये मैंने फाइनेंशियल गोल्स की बात की, ठीक है. बट बिफोर all these financial goals, you need to have risk management in place. ओके. फाइनेंशियल गोल जो बच्चों के एजुकेशन, मैरिज, ये सब वो सब फाइनेंशियल गोल्स तो ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें रिस्क कवर करना चाहिए. तो जब भी मैं रिस्क की बात करता हूँ तो उसमें इंश्योरेंस आ जाता है, योर लाइफ इंश्योरेंस एंड योर मेडिकल इंश्योरेंस, एंड वन मोर थिंग द इमरजेंसी फंड्स. तो पहले आपको ये चीज कवर करना है. देन आपके पास जो पैसा बचता है वो आपको इन्वेस्ट करना है. Why? Because we'll first take the life insurance part. So, like say there is a family of 4, husband, wife, and 2 small children, and there are old dependent parents. So, and only one earning member, the husband. Okay. Now, कल ये सब हम सपोज उसने सब फाइनेंशियल गोल प्लानिंग और वो सब उन्होंने बनाया, लेकिन सपोज कल उठ के उसको कुछ हो जाता है, if the husband is no more, what will happen to the family? Sir, you are muted, I suppose. You are saying something. नहीं, you go ahead. अच्छा, okay. So what I was saying is कि कल उठ के अगर वो husband को कुछ हो जाता है, then what everything goes for a toss. Forget about future goals. खाने के वांदे पड़ जाएंगे. So the first thing one needs to do is to have a life insurance. Okay. और life insurance ये कितना होना चाहिए? That depends on situation to situation. It is not a one size fits for all. पहला पॉइंट है लाइफ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस उसका होना चाहिए जो अर्निंग मेंबर है. ओके. तो इफ वाइफ इज देयर, शी इज अ हाउसवाइफ या छोटे बच्चे हैं, तो उसके लिए कोई पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड फॉर लाइफ इंश्योरेंस ऑन द डिपेंडेंट इंडिविजुअल. ओनली द वर्किंग पर्सन, द अर्निंग मेंबर नीड्स टू हैव लाइफ इंश्योरेंस. सेकेंडली, जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, सिंपल टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और कोई भी खिचड़ी नहीं लेनी चाहिए. कोई भी खिचड़ी प्रोडक्ट लाइक योर इंडाउमेंट प्लान या मनी बैक प्लान, वो प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके प्रीमियम्स हाई होते हैं और जो भी आपको मनी बैक है, जो भी आता है, इट इज उसका अगर आप IRR कैलकुलेट करने को जाओगे तो इट हार्डली कम्स टू 6%. ओके. तो जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हो तभी आपको सिंपल टर्म इंश्योरेंस लेना है और कुछ नहीं लेना. नो खिचड़ी प्रोडक्ट. ओके. कितने का लेना है? हाँ. तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन. अगर आपके डिपेंडेंट्स है, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल में आपको बताया, डिपेंडेंट्स है, तो आपको ज्यादा अमाउंट का लगेगा. अगर आपका लोन है, सपोज आपने होम लोन लिया है, ओके, और अगर ओनली वन सिंगल पर्सन इज अ अर्निंग मेंबर, तो कल उठ के कुछ हो जाते तो होम लोन कौन चुकता करेगा? Who will pay the EMI? Let's say my income is only 10 lakh rupees per year. हाँ, How much insurance I require?
See, generally family the and thumb rule everything is is, there. yeah. So generally a thumb rule is कि 10 times of your annual income होना चाहिए. That's a thumb rule in the market कि भाई अगर 10 लाख का आपका इनकम है तो आपका 1 करोड़ का आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए और उसका कुछ प्रीमियम आएगा अराउंड से 12,000 और समथिंग ऐसा टर्म इंश्योरेंस का. बट अगर Okay. 1 करोड़ रुपए है, अगर 1 करोड़ रुपए अगर लेट्स से कि फैमिली को मिलता है एंड लेट्स से दे डोंट हैव एनी फाइनेंशियल लिटरेसी एंड दे पुट दैट इनटू व्हाट, दे पुट दैट इनटू FDs एंड नॉर्मल स्टफ, right? And in FDs and stuff you only get 5 to 6%, so that means that you'll get a lower bracket, which means even if you get 6%, that means only 6 lakh rupees. That means standard of living will be reduced. So don't you think that 10 times rule is not correct? So exactly, मेरा पहला statement यही था, it will depend on situation to situation, person to person. Okay, then you said कि भाई अगर thumb rule अगर हम consider करते तो thumb rule में ये है कि भाई 10 times होना चाहिए. Now say for example there is a person who does not have any dependents, single है, उसके parents नहीं है, उसकी wife नहीं है, कोई children नहीं है, तो उसको life insurance की जरूरत ही नहीं है. There are no dependents. So it will depend on many things. कितने dependents है आपके, आपका कोई दूसरा liability है, loan है, home loan है, उसके ऊपर सब depend करके. तो basically you will उसको assess करने के लिए you may have to sit with your financial advisor कि कितना चाहिए. He will be able to guide you on specific points. ठीक है, फिर इसके बाद आता है so life insurance. One question, Raj. As you said, like the thumb rule is 10 times. Like what is the basis for that 10 times? Basis 10 times का basis ये है कि when that incident happens, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, say around 10 years, 12 years से है, तो उनको उसका एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए उसके स्कूल फीस या कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो भी है, वो कंप्लीट करने के लिए उतना थोड़ा समय लगेगा. तो फॉर दैट पीरियड, फॉर दैट 5-10 years का जो पीरियड, तो उनके लिए कुछ कुशन होना चाहिए. They need to have that cushion for some period. And at the same time कि जो wife है उसको भी if she wants to develop a source of income, तो उसको थोड़ा पैर पे खड़े होने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगेगा. So that is why एक thumb rule बनाया है कि भाई 10 times of your annual income होना चाहिए. Basically, yeah, sorry, yeah, if I may just reword his explanation, तो मतलब शायद मनीष जी को probably और easily हो जाए. बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि अभी अगर आप साल में 10 लाख रुपया कमा रहे हो, तो अगर आपने 10 साल के हिसाब से 1 करोड़ रुपया रख लिया, तो ऐसा है कि अगर वो बंदा 10 साल है भी नहीं तो भी महीने के आपके 10 लाख रुपए आ ही रहे हैं, अगर उसमें से भी आप तोड़ के निकाल रहे हो तो भी. फॉरगेट अबाउट कंपाउंडिंग एंड इंटरेस्ट. हाँ, वो इसमें बात नहीं है. उसका लाइफस्टाइल तो नीचे आ जाएगा ना, जो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज इट विल बी ओनली सॉरी. Yeah, carry on. I'm sorry, your voice is not coming properly. 10% वजह से बोल रहे हैं. राजा आपका आवाज आ रहा है. Can you hear me now? Yes. Yes. See, अगर assuming a rate of return of 10% on our investment ना, तो अगर कोई बंदा 10 लाख रुपया साल का कमा रहा है, तो उसका 10 times हो जाता है 1 crore. तो 1 crore rupees का इंश्योरेंस रहेगा, तो in case anything happens to him, so his dependents will get that 1 crore, और उसको अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट करता है जिसके रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, which works out to 10 lakh rupees. So उसकी फैमिली को 10 lakh my question was very clear. Abhinav, you are right. Very clear. Abhinav, your question is right. I think the main answer is that what he's investing, individual is investing, out of that investment, some investment is towards the term loan, rest is the investments. Of course, you cannot think of the family after your death, he will have the same lifestyle with that money.
So to secure that, he's putting some money in the term loan and some money in the other investment. That's it. That is how it goes. So Yes. if for Sir, we term will- loan, it becomes 10 times his earning. Yeah. So that means Sir, that term insurance is the term that you're talking about is not adequate. That's what my question is actually. If you're saying 100% 10 not times, See, that it is means not that a sacrosanct that's not figure. adequate. सर ये जो 10 टाइम्स है ना, इट इज नॉट सेक्रोसेंट, वो हर एक इंडिविजुअल का जो कंडीशन इन लाइफ है, जो उसका अगर इसके पास कोई लोन है, उसका फैमिली कितना बड़ा है, उसका फैमिली लाइफस्टाइल कितना है, वो हिसाब से इट हैज टू बी इंडिविजुअली कैलकुलेटेड. दिस इज अ बॉल पार्क फिगर. और उसका मोटा मोटा लॉजिक मैंने वही समझाया कि अगर 1 करोड़ रुपया उसके फैमिली के हाथ में आता है, वो अगर इन्वेस्ट करते हैं at a place where they get a return of 10%, तो every year उनको 10 लाख रुपए मिलते रहेंगे जो उनकी पहले की इनकम थी फैमिली. So I hope that answers your question, sir. Now I would request to move ahead and we'll cover all the questions at the end of the session, or we will not be able to cover all the slides that we have intended to. Is it okay, sir? Yes. Okay, go ahead. Yeah, please go ahead, please. Yeah, thank you. Yeah. Thank Okay. you, sir. Okay. Then the second part comes your medical insurance. Now the first part हमने cover किया life insurance. Now comes the medical insurance. मेडिकल इंश्योरेंस का भी सिमिलर सीन है. आज इन केस कुछ भी छोटा मोटा हमें हो जाता है, हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो 3-4 दिन में ही हॉस्पिटल का बिल लाख रुपए आ जाता है. ठीक है. तो नाउ इमेजिन समवन हुज जस्ट स्टार्टेड अर्निंग और उसको ऐसा कुछ हॉस्पिटलाइजेशन का इशू फेस हुआ, तो उसका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग इट विल गो हेवायर. तो ये मेडिकल इंश्योरेंस भी लेना जरूरी है, और उसमें भी यू हैव टू चेक द टर्म्स एंड कंडीशन. उसका पॉलिसी में क्या क्या कवर है, क्या क्या कवर नहीं है, क्रिटिकल इलनेस का कवरेज, को पेमेंट, देन बहुत सारे उसमें टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं. उसका रिस्टोरेशन बेनिफिट्स आता है. तो आपको सिर्फ ऐसा ऑनलाइन जाके सिर्फ आप कंपेयर करोगे कि भाई say for 10 lakhs of your sum assured, ये पर्टिकुलर कंपनी का पॉलिसी उसका प्रीमियम कम है तो मुझे वो लेना है, जो दूसरा ज्यादा है वो मुझे रिजेक्ट करना है. तो इफ यू गो बाय दैट लॉजिक, इट मे बी वेरी मच पॉसिबल कि भाई आपने you will miss out on the various advantages of the other policy. आपको terms and conditions देखना है कि पॉलिसी A आपको क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है, पॉलिसी B आपको क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है, और वो हिसाब से आपको कंपेयर करना है. सिर्फ प्रीमियम देख के और सम एश्योर्ड देख के आपको कौन सा पॉलिसी लेना है वो डिसीजन आपको नहीं करना. ठीक है. एंड इसमें भी अगर आप बॉल पार्क फिगर आप बोलोगे तो इट वुड बी अराउंड 10 lakhs का पॉलिसी होना चाहिए. अभी आजकल कुछ बाईपास सर्जरी या ऐसा कुछ है तो उतना अराउंड 10 lakhs का बिल हो ही जाता है. तो इसका 10 lakhs का अगर आप प्रीमियम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम टू अराउंड 15-20,000. ओके. तो पहले आपको लाइफ इंश्योरेंस आपको लेना है, फिर आपको मेडिकल आपका कवरेज होना चाहिए. एंड वन मोर थिंग हियर इन मेडिकल इंश्योरेंस, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ अर्निंग मेंबर का पॉलिसी लिया था, यहाँ पे हमें फैमिली फ्लोटर लेना है. ओके. यू हैव टू बाय अ फैमिली फ्लोटर पॉलिसी. फैमिली फ्लोटर में क्या होता है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कवर्ड. So Hirani sir, are you speaking something? You are muted, I suppose. Hirani sir, are you speaking something? Continue. Okay. हाँ, ओके. तो फैमिली फ्लोटर यहाँ पे आपको लेना चाहिए पॉलिसी वेयर ऑल द मेंबर्स आर कवर्ड, क्योंकि मेडिकल एक्सीजेंसी किसको भी आ सकती है, बच्चे को आ सकती है, वाइफ को आ सकती है. Then comes contingency planning. That is your basically nothing but your emergency funds. At least
6 to 12 months का जो आपका घर का एक्सपेंसेस है वो आपको साइड में रखना चाहिए, वो आपका इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। अभी से कल उठ के जैसा हम लोग ने देखा फ्यू इयर्स अगो कोरोना आया था, तो कोरोना में एवरीथिंग वाज लॉकडाउन, ओके, लोगों के बिजनेस बंद हो गए थे। तो इन इन सच सिचुएशंस घर कैसे चलेगा इफ यू डोंट हैव इमरजेंसी फंड्स इन प्लेस? तो एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स का जो आपका एक्सपेंसेस है वो आपका इमरजेंसी फंड में होना चाहिए, एंड दैट यू कैन इन्वेस्ट इन सम लिक्विड म्यूचुअल फंड्स और इन सम शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स वेयर यू कैन इजीली लिक्विडेट एंड स्पेंड। ठीक है, तो क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड इसका भी some rule है around 6 to 12 months of your monthly expense. Now, after all the risk, the risk is covered, the risk management part is covered, then comes your actual goals. Now, ये जो गोल के लिए जैसे हमने अलग अलग गोल देखा, घर लेना है हमें, बच्चों का एजुकेशन, मैरिज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट गोल है हमारा रिटायरमेंट गोल। ओके, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, रिटायरमेंट गोल क्यों बोल रहा हूँ, व्हाई नॉट एनी अदर गोल? बिकॉज रिटायरमेंट इज समथिंग जिसके लिए आपको कोई लोन नहीं मिलता है। हैव यू एवर सीन कोई बैंक ऐसा रिटायरमेंट के लिए आपको लोन देता है? तो यू जनरली वर्क अप टू 65 years of age एंड यू लिव अप टू से 80-85। तो 20 साल जो आपको जो और बिताने हैं, तो वो आप कैसे बिताओगे इफ यू डोंट हैव अ पर्पस? एंड व्हाई टू डिपेंड ऑन चिल्ड्रन? वी नीड टू इंश्योर दैट वी हैव सफिशिएंट पर्पस जिससे कि हमें रेगुलर इनकम मिले टिल वी आर अलाइव। तो रिटायरमेंट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रिटायरमेंट प्लानिंग कभी से चालू करना चाहिए? Not later or not in your 40s, not in your 50s. You have to start for your investing for your retirement purpose the day you start earning. If you are 21, if you are 25, you started earning, you need to save and allocate your investments for retirement planning. Okay. So say if you are having savings of 10,000, तो बच्चों का एजुकेशन के लिए आपको करना है, मैरिज के लिए करना है, वो बात तो ठीक है, तो उसके लिए आप 5,000 रखोगे साइड में, लेकिन अपना रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए भी आपको तभी से ही इन्वेस्ट करना चालू करना है। तो 5,000 यू सेव फॉर योर रिटायरमेंट एंड अदर 5,000 यू कैन सेव फॉर योर अदर गोल्स, बट रिटायरमेंट प्लानिंग इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, तो नाउ कमिंग टू स्पेसिफिक्स, सम फिगर वर्क कि हम एजुकेशन प्लानिंग कैसे करें। अभी से आई हैव से 10-year-old चाइल्ड, और उसको मुझे अराउंड 20 साल के आसपास पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई अच्छा कोर्स मुझे करवाना है, एमबीए करना है अच्छी यूनिवर्सिटी से, या डॉक्टर के लिए एनरोल करवाना है, तो उसके लिए मुझे कैसे प्लान करना चाहिए? तो द स्टार्टिंग पॉइंट इज, उसके लिए ये देखना है कि आज के टाइम में व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स, या जो भी एजुकेशन का जो एक्सपेंसेस है वो आज के टाइम में कितना है। तो मान के चलो कि भाई कोई एमबीए के लिए मुझे प्लान करना है, मेरा बच्चे को एमबीए करवाना है आफ्टर 10 years, तो आज वो एमबीए की कॉस्ट है 10 लाख। तो 10 साल बाद उसकी कॉस्ट क्या हो, दैट आई नीड टू एसेस। तो मैं ये मानता हूँ कि भाई एवरी ईयर एजुकेशन का जो मतलब एज पर फिगर, एज पर डेटा, एजुकेशन इन्फ्लेशन इज अराउंड 8%। तो मैं 8% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो ये 10 लाख जो आज मुझे लगता है वो 10 साल के बाद मुझे 21.58 लाख मुझे लगेगा इन ऑर्डर टू एनरोल माई चाइल्ड फॉर दैट कोर्स। तो मुझे 21.58 lakhs का मुझे कॉर्पस लगेगा आफ्टर 10 years and not 10 lakhs. Okay. So now 21.58 lakhs which I require after 10 years
तो आज के टाइम पे मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वी हैव टू डू अ बैक कैलकुलेशन। तो ये हिसाब से आई विल हैव टू ऑप्शन। अगर मेरे पास लमसम अभी पैसा पड़ा है से 6,95,116, तो मैं इतना अगर आज मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो 10 साल के बाद मुझे वो 21.58 लाख मिल जाएगा एज पर एट द रेट ऑफ 12% रिटर्न। और अगर मेरे पास लमसम पैसा नहीं है तो, और मंथली मेरा सेविंग्स हो रहा है, तो मंथली मैं 9,636 अगर मैं इन्वेस्ट करते जाऊँ इन से म्यूचुअल फंड के कोई सिप में करूँ, तो एट द एंड ऑफ 10 years I will have 21.58 lakhs. Okay. Now similarly, similar calculation can work for your marriage expense. अभी मैरिज एक्सपेंस से मुझे 15 साल के बाद तो से माई चाइल्ड विल बी अराउंड से 25 से फॉर एग्जांपल, और कभी इनकेस मैरिज के लिए मुझे कॉर्पस चाहिए, तो मैरिज के लिए कितना कॉर्पस मुझे लगेगा 15 years डाउन द लाइन। तो मुझे आज के एक्सपेंसेस मुझे फिगर आउट करना है। तो से अगर मैं बोलता हूँ आज अराउंड 20 lakhs का कॉर्पस लगता है, आज 20 lakhs का एक्सपेंस होता है फॉर अ मैरिज, तो 15 साल के बाद कितना हो, तो उसका भी अगर मैं 8% के हिसाब से इन्फ्लेशन पकड़ू, तो दैट विल कम टू अराउंड 63 lakhs, 63.44 lakhs। तो मुझे इतना कॉर्पस मुझे लगेगा आफ्टर 15 years, तो उसके लिए मुझे आज से प्लान करना है। तो इसके भी दो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर मेरे पास लमसम है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो मुझे मंथली इन्वेस्ट करना है। तो मंथली इसका कैलकुलेशन आएगा अराउंड 13,000। तो 13,000 एवरी मंथ अगर मैं इन्वेस्ट करते जाऊँ, तो एट द एंड ऑफ 15 years आई विल हैव दैट मच कॉर्पस। ओके। तो नाउ ये दो मैंने एग्जांपल दिया कि भाई आपको कैसे प्लान करना है कि भाई मुझे आज कितना इन्वेस्ट करना है, एवरी मंथ मुझे कितना इन्वेस्ट करना है फॉर टू अचीव दैट गोल। तो उसके लिए ऑल्सो वी नीड टू फिगर आउट कि भाई मेरा आज का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, व्हाट इज माय फाइनेंशियल पोजीशन टुडे, कि मुझे जो 9,000 या जो 13,000 का जो मुझे एवरी मंथ जो मुझे इन्वेस्ट करना है, क्या मैं वो कर पाऊंगा? डू आई हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेविंग्स? इनकम है मेरे पास, एंड एक्सपेंसेस कितना जा रहा है, दैट आई नीड टू फिगर आउट। तो उसके लिए आप यू कैन डू दिस बेसिक एक्सरसाइज की मंथली आपका इनफ्लो, आपका सोर्सेज ऑफ इनकम एंड आपका एक्सपेंसेस कि कहाँ कहाँ पे जाता है, योर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस, योर नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस। नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस तो बेसिकली जो फूड हम खाते हैं कि भाई वो उतना तो मिनिमम लगता ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस going out to restaurant, going out for movies और planning a vacation, वो सब आपका discretionary expense। तो यहाँ ये एक्सरसाइज करने से आपको मालूम पड़ेगा कि भाई whether there is a shortfall or not, whether you have sufficient savings for that, और अगर shortfall है तो आप कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस आप कर्व कर सकते हैं, where can you shorten। अगर आप एवरी संडे आप सपोज रेस्टोरेंट जाते हो, तो instead of that you can do instead of 4 times in a month, you can try and do 2 times, you will be able to save at least 5,000 rupees। ओके। तो सिमिलरली आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से एक्सपेंसेस आप कट डाउन कर सकते हो, और वो हिसाब से करना है। तो ये अगेन ये इन्फ्लेशन का एक स्लाइड है, जो आज अगर 50,000 का एक्सपेंसेस हो रहा है, तो आफ्टर 9 years इट विल बिकम इट विल गो डबल ये। ओके। एंड आफ्टर 18 years उसका डबल हो जाएगा। 50,000 का 1 लाख हुआ, 1 लाख का 2 लाख हुआ, 2 लाख का 4 लाख हुआ। तो इन्फ्लेशन eats away into our earnings। now coming to specific products, ये हमने फाइनेंशियल गोल्स और बजट प्लानिंग की बात कर दी। नाउ कमिंग टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, अभी आप यहाँ पे देखिए जैसे एफडी, हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है अवेलेबल इन द मार्केट। एक तो हमारा फिक्स्ड इनकम है, दैट इज योर एफडी या बैंक डिपॉजिट। दूसरा है आपका गोल्ड है,
और तीसरा है इक्विटी, एंड देयर इज आल्सो रियल एस्टेट। तो ये चार बेसिकली ब्रॉड प्रोडक्ट है। तो अभी इसमें हम अगर एफडी सपोज लेते हैं, एफडी में आप देखेंगे कि अराउंड 7% या उतना ही रिटर्न मिलता है। नाउ अभी अगर आप इसमें इन्फ्लेशन को निकाल लेते हैं 6% 7%, तो आपके पास हाथ में कुछ बचता नहीं। एंड इनफैक्ट एफडी रिटर्न इज टैक्सेबल, आपको उस पे आपके स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स लगता है। तो नाउ से इफ यू आर इन 30% टैक्स लेस, तो ये 7% या 6% का उसका 30% वहां ही निकल जाता है। तो नेट यू आर गेटिंग 4%, और उसमें आप माइनस करोगे योर इन्फ्लेशन, तो योर रिटर्न्स गो नेगेटिव। ओके, योर रिटर्न्स गो नेगेटिव। तो एफडी में इन्वेस्ट करना इतना सेंस नहीं बनता फॉर वेल्थ क्रिएशन। नाउ coming to gold, now gold has given good returns around 11-12% it has given in last 20-30 years, so that is a good option. And gold में आप ये SGB का एक नया प्रोडक्ट आया है, आप यू डी नॉट टेक फिजिकल गोल्ड, आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आरबीआई एवरी 2-3 मंथ्स लाती है पीरियोडिकली, और वो आपके डीमेट में रहता है, एंड इट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। मेरे ये सभी के ऊपर सेपरेट वीडियोस मेरे यूट्यूब पे है, so you can check that out, because इसमें अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द प्रेजेंटेशन। यू कैन चेक दैट पर आउट। सर्विस बोर्ड का रेट जो था खाली 2.5% है। क्या क्या किसका? जो अभी आप क्या? बोल रहे हो सर्विस बोर्ड हाँ, जो अभी निकाला हाँ। गवर्नमेंट ने, उसका तो जो रिटर्न मिल रहा है नहीं, वो आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, वो इंटरेस्ट एडिशनल मिलता है। 5%। नहीं, वो इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, मैं कैपिटल एप्रिसिएशन की भी मैं बात कर रहा हूँ। आज अगर गोल्ड का भाव से व्हाटएवर इट मे बी कितना अराउंड 1,75,000 या उतना है, तो नेक्स्ट ईयर उसका 75,000 नहीं रहेगा ना, 75,000 का वो 80,000 होएगा। तो वो भी तो आपको मिल रहा है, वो कैपिटल गेन भी आपको मिल रहा है, कैपिटल गेन भी मिल रहा है, और ऊपर से मतलब कि आप 4.5% फोर्स ही कर रहे हो, हाँ, आप फोर्स ही कर रहे हो गोल्ड का रेट। फिर क्या बोल रहे हो? सॉरी, आप फोर्स ही कर रहे हो गोल्ड का रेट देन। हाँ नहीं, तो वही आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, और आपको एट द सेम टाइम हाँ आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, जो अदरवाइज आपको फिजिकल गोल्ड में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं दे रहा है ना। फिजिकल गोल्ड आप घर पे तिजोरी में रखते हो, तो आपको उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सो दैट इंटरेस्ट ऑल्सो 2.5% यू आर गेटिंग, एंड कैपिटल एप्रिसिएशन ऑल्सो यू आर गेटिंग। तो आपको अराउंड 11-12% आपको मिल रहा है इन ऑल। And third product would be your equity market, which the equity market has delivered around 15.5% return over last 40 years, and वो consistently दिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें वेल्थ क्रिएशन का अगर आपको करना है, तो वेल्थ क्रिएशन का एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, दैट इज योर इक्विटी मार्केट। तो ये एक एग्जांपल है कि आप अगर मंथली SIP करते हो 25,000 का, और 25 ईयर्स का SIP है, और 12% के हिसाब से अपना रिटर्न अगर हम गिनते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका 1 करोड़ का कॉर्पस बनने में 14 ईयर्स लगेगा, 14 साल लगेंगे आपको 1 करोड़ का कॉर्पस बनाने में। बट द नेक्स्ट 1 करोड़, 1 का 2 आपका जो हो रहा है, वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में हो रहा है। जैसे कि हमने कंपाउंडिंग में वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात की, तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है। फिर 2 का 3 करोड़ होने में सिर्फ 4 साल लग रहे हैं, 14 साल नहीं लग रहे, 5 साल नहीं लग रहे, सिर्फ 4 साल लग रहे हैं। और 3 का 4 होने में सिर्फ 2 साल लग रहे हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो रेड लाइन आपको दिख रहा है, दैट इज योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एंड जो ब्लू लाइन है, दैट इज योर लीनियर ग्रोथ। नाउ ऑन सिमिलर लाइंस, ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया है कि भाई फॉर एन एवरेज इंडिविजुअल, अगर किसी का सिर्फ 40,000 का से सैलरी है, और वो सिर्फ 5,000 सपोज बचा सकता है, 35,000 का उसका एक्सपेंस निकल रहा है, एंड दैट
person is say getting an increment or at the rate of the inflation rate. That's the general policy everywhere कि जनरली इन्फ्लेशन रेट जितना है उतना आपको इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है। तो वो हिसाब से अगर आप इसका कैलकुलेशन देखोगे, इफ इज एबल टू सेव ओनली 5,000, इवन देन आप अगर देखोगे कि इसमें हमने दो सिनेरियो कंसिडर किए, 12% और एक 15% का, तो दिस पर्सन will take 22 years to reach 1 crore. ओके, लेकिन जो उसका जो दूसरा करोड़ जो एक का दो जो बन रहा है वो 27 ईयर्स में बन रहा है, मतलब 22 ईयर्स और ये सिर्फ 5 ईयर्स। तो पहला करोड़ बनाने में 22 साल लगे और दूसरा करोड़ उसका सिर्फ 5 साल में बन रहा है, और जो उसका तीसरा करोड़ यहाँ पे 2 से 3 जो बन रहा है वो सिर्फ 3 साल में बन रहा है। यू अंडरस्टूड? So even for an average individual, this is possible. Wealth creation is possible. और दूसरा चीज यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये टेबल में और एक चीज कवर है, एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में। ये जो टेबल है, तो यहाँ पे आप देखिए कि उसका when he is 46 years of age, when he is 26 years into his work life, उसका जो सैलरी, जो एक्टिव इनकम से जो उसका आ रहा है सैलरी, जो काम कर रहा है वो टाइम दे रहा है, उसका जो एफर्ट्स दे रहा है, उससे जो उसका इनकम आ रहा है, दैट वुड बी अराउंड 32 lakhs पर एनम। बट आप यहाँ पे देखिए उसका जो पैसिव इनकम से उसने जो 5-5 हजार बचा के उसका जो अभी कॉर्पस बन गया है, और उससे जो उसका इनकम आ रहा है दैट इज 33 lakhs। तो दैट हैज बीटन हिज एक्टिव इनकम। Okay, the income from his investments has beaten the active income, which is working wherever he is working in a job or a business, जो भी है वो। तो यहाँ पे ये दो चीज हम देखा हम लोग ने कि भाई ये एक्सपोनेंशियल कैसे ग्रो हो रहा है, वो चीज देखा, और ये एक्टिव और पैसिव इनकम का हमने देखा। और आप देख सकते हो कि when he is retiring at the age of 60, उसका कॉर्पस कितना बन गया, यहाँ पे 10 करोड़ बन गया, 10.5 करोड़ जितना बन गया है उसका कॉर्पस। तो जब भी वो रिटायर होएगा एट द एज ऑफ 60, he will have 10.5 crores in hand, और एट द रेट ऑफ 12%। और अगर 15% के हिसाब से हम देखते हैं तो उसका 21 करोड़ हो जाता है। तो एंड ही विल बी एबल टू रिटायर वेल्दी, और उसका ऑल हिज एक्सपेंसेस विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके, सो सिमिलरली ये दूसरा एग्जांपल है। यहाँ मैंने थोड़ा इनकम ज्यादा लिया है तो सेविंग्स भी ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट 60 इयर्स ऑफ एज उसका, यहाँ पे मैंने 40,000 का सेविंग्स लिया है। एट 60 इयर्स ऑफ एज उसका कॉर्पस बन रहा है 85 करोड़। ये 8.5 करोड़ नहीं है, ये 85 करोड़ है। एंड एट 15% इट इज 168 करोड़। तो ऑल दिस वेल्थ क्रिएशन इज पॉसिबल। ये कोई ड्रीम्स या ऐसा कुछ नहीं है, इन रियलिटी इट इज पॉसिबल इफ यू हैव इनफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। So But a person who has so just joined an job at the age of 21, can he able to save 40,000? So it Per depends, month. sir. वो कौन से फील्ड में है। if is an average Joe, he may not be able to earn that much income. लेकिन काफी सारे इंजीनियर, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी काफी सारे है who are earning this much, maybe not at the age of 21 but at the age of 25. There is one of my friend who is earning 70 lakhs per annum. On an Okay. average, how much an individual earns? On an average, sir, it varies. It depends on your skill. It depends on your skills. अगर कोई skilled बंदा है तो अच्छा कोई आप ये सब फेसबुक और उसके भी एग्जांपल देख लो आप, वो 15 साल 20 साल में भी दे आर मिलियनर्स। तो ऐसा कोई एवरेज फिगर नहीं है। इसलिए मैंने आपको दोनों एग्जांपल बताया, एक 5,000 का एग्जांपल बताया, जो सिर्फ 5,000 सेविंग्स कर पा रहा है, और दूसरा मैंने ये 40,000 का एग्जांपल बताया। तो सब टाइप के लोग हैं, one who is earning very well, one who is earning very average. ठीक है। सो नाउ और एक ये स्लाइड है कि आपका पैसा मल्टीप्लाई कहाँ पे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो 10 अगर आप एफडी का अगर आप देखते हो, एफडी में यहाँ पे, तो एफडी में आप इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल में आपका 2 गुना होता है।
गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल में आपका 3 टाइम्स होता है, और इक्विटी में करते हो तो 4 टाइम्स होता है। बट यही चीज अगर आप मतलब 20 इयर्स का अगर आप फिगर लेते हो तो ये 2 का 4 गुना हुआ एफडी, गोल्ड हुआ 3 का 8 गुना, और ये इक्विटी आपका 4 का 16 गुना हो गया। So equity beats all your other products in terms of wealth creation. What about real estate? Sir, real estate में there are certain drawbacks. Real estate में जो rental yield है that is only around 2 to 3%, and उसके लिए आपको पैसा भी काफी ज्यादा लगता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के। 1 करोड़ 2 Why? करोड़ का No, you can. प्रॉपर्टी रहता है। नहीं, there are certain things that you can take home loan from the bank. And देखो, what I have seen is in the last from 2010 to till now, the property land prices have gone up by more than like average 10 times. सर वही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन लैंड और वो सब उसमें है ना, काफी सारे ड्रॉबैक्स है, इंक्रोचमेंट का इश्यूज रहता है, और कहाँ पे आपने जगह ली है, और पैसा भी बड़ा लगता है। इट इज इनलिक्विड, जब भी आपको बेचना है तभी भी आप आपका इमीडिएट आप सेल नहीं कर सकते हो, तो हाँ, और मेंटेनेंस भी लगता है, एनक्रोचमेंट भी होता है। नहीं, I understand your point. See, my experience, I have invested in all the different areas. ठीक है, तो मुझे ये देखा है कि जो भी आप रोड पे लग्जरी गाड़ी देखते हो, 8 out of 10 they are from real estate. Okay, maybe. Yeah. तो पॉइंट ये है कि देखो, मैंने तो हर फील्ड में, द पॉइंट ये है, इफ यू वाइजली मेक इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, यू नो, सी आई बॉट अ लैंड, टेक 80% लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है। तो मेरा क्या है कि प्रॉपर्टी बैंक का पैसा भी 4 साल में 4 गुना हो गया, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो भी 4 गुना हो गया। तो मेरा कहना मतलब क्या है कि इफ यू वाइजली इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट इन लैंड, द प्रॉफिट्स आर रियली वेरी वेरी हाई। हाँ, तो if you have skills, definitely, if you have the resources, you can definitely look at that option. You definitely can look at that option. So my experience is based on whatever I have read, you know, 70% of the money should be parked in real estate, and the rest 30 should be in gold, equity, and all those things. Because you can see on a real estate you can get a handsome loan from the bank, and that is the cheapest money you can have. Like, see, I'm just sharing my experience. I might be wrong, you know. I'm just sharing my experience. Just a minute. Okay. Sir, I would like to respond on this. If you compare real estate with equity investments, ना, तो see, I'm saying we should diversify. उसमें कोई कुछ गलत नहीं है। Everybody should diversify across various asset classes. But इसमें अगर हम compare करते हैं तो पहली चीज रियल एस्टेट अपने को बाय करना है ना, तो we need good amount of money. मीन्स आजकल हम देखने जाए तो इफ यू हैव टू बाय फ्लैट और प्लेस, 1-2 करोड़ से नीचे कुछ मिलता नहीं है। दैट इज नॉट द केस विथ इक्विटी। अब बंदा जो 5-10 हजार सेव कर पाता है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। दूसरा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज हाईली इनलिक्विड। मुझे बेचना है सर, दिस इज आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर ऑल्सो राइट, आई मे बी ऑल्सो राइट। तो वो हाईली इनलिक्विड रहता है। जब भी बेचना होता है तो इट इज नॉट, अगर सपोज मुझे आई हैव बॉट अ प्लेस फॉर अराउंड 1 or 2 करोड़ रुपीज और मुझे कल 10 लाख रुपया चाहिए, तो मैं मेरा फ्लैट का एक रूम नहीं बेच सकती। बट इन द केस ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, I understand your point. See, my point is, yeah, go ahead, please, go ahead, yeah. Yes sir, मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मैंने सेम 1 करोड़ रुपया इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, इधर डायरेक्टली शेयर्स बाय करके या थ्रू म्यूचुअल फंड रूट, कल मुझे 10 लाख रुपए चाहिए तो मैं खाली 10 लाख रुपया विड्रॉ कर सकती हूँ और 2 दिन में मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। सो दैट इज द सेकेंड फैक्टर। तीसरा चीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर, इसमें मेंटेनेंस भी लगता है। सो एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हिस्टोरिकली इक्विटी रिटर्न्स हैव बीटन रियल एस्टेट रिटर्न। उसका मतलब मैं ये नहीं करना चाहती कि हमें रहने के लिए घर में बाय करना चाहिए या वी शुड नॉट बाय मेक रियल एस्टेट, वी शुड, बट डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल जो सभी के पास लिमिटेड होते हैं, वी हैव टू डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट क्लासेस, और उसमें इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न एंड द अमाउंट which we save, equity sounds to be a better investment for majority of the people.
सब लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते सर. No, I got your point. I agree to that. See, my question was, if you have spare money and if you don't need that money for like 5-10 lakh requirement, okay. What I mean to say is, if you, it is, I'm just sharing my experience. Whatever money I invested in real estate in good pockets of the society of the city, they have given me very high returns. Sometimes you get 10 time return in 10 years. Right. The point, the point that I'm trying to make is, if let's say somebody has spare money of 50 lakhs at the age of 35 years or whatever, between 35 to 40, okay, you have 50 to 70 lakhs in your pocket, and you can take a loan of 1 crore to 1.5 from the bank, which is the cheapest money you can have, right? And let's say if your money grows 2 times in 3 years or 4 years, you can use that money and you can you can have a property, you can have a rental income, and use that rental income for making SIPs in the equity market. So basically, you are getting the SIP money also, and your property is also appreciating. That's what I'm trying to make. Maniji, if you have invested in JP Wishtown in 2005 till 2015, your money is not going up, it's going down. Right? Where? And most probably JP Wishtown in Noida Expressway. No, I'm talking about Right. land. I'm talking even in land. If let's say if you have invested in 2008 in Noida Expressway, all right, the land rate was 2.5 lakh rupees. After 2008 till 2010 or 2015, the rate was reduced to 1.75. Now tell me the land rate. Can I sell that? Can you sell that at 1.75? No. Let me tell you also. See, when you buy some land, it should be near to the heart of the city, where you can have a. If you are not able to sell the land, it was near to. It was, the land was near to heart of the city. It was near to the mall. It was near to the biggest mall of Noida. Even then. Yeah, that's rightly said. Let me answer your question. See, what happened is, where you said that if you want to get a small amount of money, you're not able to get that. Secondly, if you let's say the amount is say 50 crore rupees, and if you require only 5 crore rupees, you can't sell a portion of the land, right? And it will require a lot of time to sell it off, to dispose it off. Has its own advantages and disadvantages. So we are not saying that one asset class is better than the other. So that is what I'm coming to next. We'll talk about asset allocation. Okay. So before that, when we are talking about equity, when we say that equity is a good class to invest. Now, what most people do, they start with direct trading in FNO. तो FNO कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर लेते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं. तो which is not the right way of investing in equity market. आपको इक्विटी मार्केट में करना है तो आपको लॉन्ग टर्म ही करना है. तो रिसेंटली now whenever you open any online website of the broker, this disclosure comes to your screen कि भाई 9 out of 10 individual traders in equity, future and options incurred net losses. On an average, the loss-making traders registered a net loss close to 50,000. तो ये SEBI ने ये स्टडी किया था, and SEBI has come out with that finding. Still लोग करते हैं because of greed. So this one should not do. Derivatives mean it is only for the very well experienced people, and उसमें भी there is no guarantee that you will make money out of it. And generally, derivatives product is to be used as a hedge. It is used by fund managers as a hedge and not as an investment product. So short-term trading, intraday trading, derivatives को हाथ नहीं लगाना चाहिए. Now, as we were talking about, as we were discussing real estate equity कौन सा better है, so what we are saying is you do asset allocation. क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का प्रोज एंड कॉन्स है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है. तो जैसे हम थाली में सब अलग अलग हमें मिलता है, वैसे ही हमें हमारा जो पोर्टफोलियो जो हमें बनाना है वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लेके बनाना है. थोड़ा FD भी रहेगा, गोल्ड भी रहेगा, इक्विटी भी रहेगा, क्योंकि
ऐसा माना जाता है कि जब इक्विटी ऊपर जाता है गोल्ड नीचे आ जाता है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। अभी आप देख रहे हैं कि इक्विटी भी बढ़ रहा है, गोल्ड भी बढ़ रहा है, तो सबका अलग अलग कोरिलेशन रहता है। जब एक चीज ऊपर जाता है कोई नीचे जाता है, तो दैट विल क्रिएट अ बैलेंस इन योर पोर्टफोलियो। तो एसेट एलोकेशन होना चाहिए। तो ये एक डेटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल 2015 में गोल्ड वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास, but it became the best performing asset class in 2016. Then again next year it became the worst performing asset class. So there is always ups and downs in any asset class. हर एक asset class की cycle होती है, तो you need to have proper asset allocation. Now asset allocation क्या होना चाहिए, वो भी उसका भी एक स्लाइड है। अगर आप यंग है तो you can take more risk, you can invest more in equity markets, and if you are near to your retirement age, then some fixed product may be better for you. तो एज वाइज और आपका जो भी सिचुएशन है, आपका कितने अर्निंग मेंबर्स है और कितने डिपेंडेंट्स है, उसके ऊपर आपका डिपेंड होगा। देन ये स्टार्टिंग अर्ली जय और वीरू का ऑलरेडी कवर कर दिया है ज्योति मैम ने, तो आई विल नॉट रिपीट। So most of you would be aware about mutual funds. The mutual funds, why it is one of the preferred investment product? It is because लोगों के पास इतना skills नहीं रहता है to identify the correct companies and directly invest in those companies. Mutual fund में क्या रहता है? They have a team of experts. They have a good research team. They have high-end software. They do their own research. They meet the management. They visit the factories. So they are in a better position. They are qualified people in their team. They are chartered accountants, CFAs, all of them. So they are in a better position to make decisions on behalf of the investors. So mutual fund is a preferred route rather than you directly investing in the market. Then we are just nearing to the end of our presentation. So now one more very important thing is estate planning. Estate planning का मतलब ये real estate नहीं है, don't confuse it with real estate. Estate planning is basically आपको will बनाना है, और will आपको कभी बनाना है? Will traditionally लोग बोलते हैं कि when I'll turn 60, 70, when I'm on my deathbed, I'll make a will. ऐसा नहीं होना चाहिए. As soon as you start earning, as soon as you develop, start having various assets, you should make your will, and you can change anytime. It is very simple to make a will. आप simple paper पे भी लिख सकते हो, और you can change it as many times as you like. तो एक will बनाना जरूरी है. That is also part of your personal finance. Then one more part is the taxation aspect. Your income tax, आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको टैक्स एडवांटेज मिले, जिससे कि आपकी यील्ड बेटर हो. तो टैक्स एस्पेक्ट इज आल्सो देयर दैट one needs to understand. And these are few famous investors: Warren Buffett, Charlie Munger. Charlie Munger is no more. Then Peter Lynch, and then scams. I wanted to cover this one. Scam is आप अभी आप देखते हो काफी सारे, आप ट्विटर पे जाओगे या सोशल मीडिया पे जाओगे, you will find many people posting screenshots of their trading profits. they आज एक दिन में 1 लाख कमा दिया, 5 लाख कमा दिया. Now some may be true, but the majority of them are fake screenshots. ऐसा trading में very few people make money. और even जो apart from social media, even जो बहुत से other type of schemes रहते हैं जहाँ पे बोलते हैं 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, या in a short period of time they show you rosy picture कि भाई इतना रिटर्न मिल जाएगा, आपको 25% रिटर्न मिलेगा, गारंटीड रिटर्न मिलेगा. तो वो आपको थोड़ा उससे दूर रहना है, and you have to deal with regulated entities only. So
सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज है, आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज है, उनके साथ ही डील करता है. तो वी लाइक से फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी की बहुत लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था. नाउ इट इज एन अनरेगुलेटेड एसेट क्लास. आपका कभी भी वो पैसा जीरो हो सकता है. तो वन मस्ट अवॉइड इन्वेस्टिंग इन सच एसेट क्लास. Okay, so that was the end of the session. So what? So okay, I'll cover this slide. So basically, the crux of the entire presentation is that one must live within the means. Overspending नहीं होना चाहिए. सेविंग्स पे आपको ध्यान देना है और वो हिसाब से आपको आपका एक्सपेंसेस मैनेज करना है. लोन पे सब कुछ नहीं लेना है. ट्राई टू अवॉइड डेट. देयर आर सर्टेन लोन्स व्हिच आर गुड. से फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन है. हाउसिंग लोन इज आपको 6% पे या उतने पे मिलता है. सो दैट्स अ गुड लोन. बट देयर आर अदर कंज्यूमर लोन जिसपे 12%, 13% उतना है. सो दोज आर बैड लोन दैट यू नीड टू पे ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल. आप होम लोन जैसा लोन आप रख सकते हो. यू कैन कंटिन्यू. बट your other type of personal loans या consumer durable loan that you need to get rid of as early as possible. And retirement planning आपको करना है और वो सबसे पहला आपका फाइनेंशियल गोल होना चाहिए. और उससे भी पहले आपको पूरा आपका रिस्क मैनेज करना है. इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, वो सब आपको करना है. आपको स्कैम से अवॉइड करना है. आपको प्रॉपर एसेट एलोकेशन करना है. So all these are the areas which we covered. So that's the end of our session, sir. Irani sir. Irani sir, you are muted, I suppose. Yeah. Hi Raj, this is Manish here. Hi Manish. Hi Manish. My question is, you mentioned about mutual funds, right? So I think there are a lot of other funds also, index fund and other which give higher return than mutual funds, right? Correct, sir. So you have you want to recommend some index fund that you are aware of, or you have done research on those areas? Because see, sometimes mutual fund returns are very average returns. Okay. So even mutual funds, there are around 2,000, 3,000 mutual fund schemes. There are 50 companies, mutual fund houses are offering around 2,000, 3,000 mutual fund schemes. So this is also specific to the client. Client को क्या requirement है at a particular point of time. उसके ऊपर से वो depend होता है. There are index funds, there are multi-asset funds, there are thematic funds. वो सब अलग अलग टाइप के स्कीम्स रहते हैं और उसका हर एक स्कीम का पर्पस डिफाइंड रहता है बाय द स्कीम डॉक्यूमेंट. तो वो हिसाब से इन्वेस्ट करती है. तो हाँ, एंड वन मोर थिंग, आई हैव आस्क्ड हिरानी सर टू शेयर द फीडबैक फॉर्म. So it will take only 2 minutes for you to fill. So request you all to fill that form and send. And one more thing, you can check out our YouTube channel. YouTube channel link will be shared. YouTube channel link will be shared. You can check that out. And if you like the content, you can subscribe to my channel. Yeah. So someone has raised hand. Mr. Balaji has raised his hand. Yes, sir. I had two questions. One was yes. If you could throw some light on how we can estimate basically वो expense अपन yearly expense या जो भी target figure basically जो आप बोलते हैं ना retirement fund के लिए वगैरह. So is there a proper formula or something that we can work around for that? And the second one was you were mentioning about inflation, but when we go out and search for inflation, we come across a host of inflation rates. So what would be an ideal way to look at कि भाई ये inflation rate से अपने को benchmark की तरह आगे बढ़ना है? Of course, yeah, sorry. तो जो आपने पहला जो क्वेश्चन रेज किया रिगार्डिंग दैट फॉर्मूला, कैसे हम डिटरमाइन कर सके कि हमें ईयरली कितना बचाना है, करेक्ट? दैट इज
what your question was. Correct? नहीं, वो बचाने का भी फिर भी हम लोग वर्क बैक किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू कर सकते हैं. माय ओनली थिंग वाज कि हम जब टारगेट अमाउंट, आपने जैसे आप बोलते हैं हमने रिटायरमेंट के लिए, तो उसका कोई एक अपने पास. हाँ जी. So there are two ways. Online calculators भी available है इसके लिए. That is one thing. And other thing, आप Excel में भी आप वो particular formula डाल सकते हैं. अभी say for example, are you interested in seeing it live? I'll open my Excel and show it to you. Sure sir. It will help a lot of us. Yeah. Okay. So okay. तो मैंने मेरे एक एग्जांपल में बताया था कि आज के टाइम पे सपोज एजुकेशन का कॉस्ट है 10 लाख, करेक्ट. और मुझे 10 साल के बाद मुझे जानना है कि मुझे कितना कॉर्पस लगेगा. तो उसके लिए और मैंने रेट डिटरमाइन किया है 8% है. 8% इज द इन्फ्लेशन रेट. आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? हाँ सर, काफी छोटी है बट इट्स विजिबल, नो प्रॉब्लम. अच्छा, ओके. आई विल ट्राई टू. क्वाइट बेटर नाउ सर. ओके, सो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, इट इज हैंग. मेरा स्क्रीन हैंग हो गया. जस्ट अ मिनट. ओके, सो यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल है. इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू रेट है मेरा. नहीं, आप वो फ्यूचर वैल्यू का छोड़िए. आप यहाँ पे ही आप से 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%. नहीं है तो कुछ दिखा कर नहीं, खाली खाकरा और क्या देगी 8%. बनाया कुछ नहीं ना तूने. नाश्ता बस तो खाकर देना खाकरा. एक काम कर, एंड यू हैव टू रेज इट टू खाकरा पे थोड़ा पापड़ी कीचड़ चूर के दे दे. ये जो आपका सिंबल है वो मसाला जो आपका नंबर है लैपटॉप पे, उसके ऊपर का सिंबल है. ये एक्सपोनेंट का फंक्शन है. तो रेज टू 10. ठीक है, हम एंटर करेंगे तो ये आ जाता है. ये मैंने यहाँ पे 1 लाख डाला है, उसको मुझे 10 लाख करना है. ओके, तो ये फिगर था. बालाजी सर, did you check it is matching that figure which I had shown you earlier in that slide? Yes. 10 साल के बाद मुझे 21,58,000 लगेगा. So this is how you can determine the future value. Yes sir. And the second question was related to this regarding तो इन्फ्लेशन रेट जो हम देख पाएंगे वैसा. हाँ, तो इन्फ्लेशन रेट अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन का अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे तो 8% रहेगा. फिर जो गवर्नमेंट जो इन्फ्लेशन रेट पब्लिश करती है तो 4.5%, 5%. तो दैट इज अ डिफरेंट सेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट. तो करेक्ट. हाँ, वो फूड रिलेटेड फूड इन्फ्लेशन इंडेक्स और वो सब कंसीडर करती है. तो ओके, तो स्पेसिफिक टू योर रिक्वायरमेंट, आप जो एरिया के लिए आप जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके. दैट यू कैन डू अ सिंपल गूगल सर्च. आप करोगे तो भी आपको थोड़ा एस्टिमेट. एक्सेलेंट सर, समझ गया. मतलब वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. अगर आप रिटायरमेंट के तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, एजुकेशन के लिए तो एजुकेशन इन्फ्लेशन, मेडिकल के लिए तो मेडिकल इन्फ्लेशन. परफेक्ट सर, परफेक्ट. दैट वर्क्स. करेक्ट. दैट फिगर वुड बी इजीली अवेलेबल ऑन गूगल. राइट सर. नहीं वो वही हुआ था. मैंने जैसे एक बेंचमार्क की तरह ये करने की कोशिश की तो थोड़ा कंफ्यूजन था कि कई सारे रेट्स आ रहे थे. तो आई वाज, नाउ इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस सर. या
you have shared the YouTube link and all. Yes, sir. You should. I would suggest that you also put it in the group so that we can share it with our contacts too. Yeah, sure. I'll put it in the group. Which the WhatsApp group or this Zoom meet? Zoom meet would go away once we close the meeting, sir. So WhatsApp group would be a better way option. Okay, so we'll send both the link, YouTube link as well as the Google form at both the places in the Zoom meeting as well. And मैंने दोनों भेज दिया है राज, मैंने दोनों भेज दिया है, Google form, great, feedback का और YouTube के चैनल. Okay, sir. Great, sir. On the group. Sorry, we have exceeded the time. 15 minutes ज़्यादा हो गया. Time was up to 10. And you please give us a feedback. और अगर आपको लगे कोई और भी topics future में cover करने हैं, तो please write down in the feedback form. We'll try and organize one more session. थोड़ा और detail में हम discuss कर सकते हैं. And also अगर आपके कोई contact में ऐसा कोई schools है या ऐसा कोई सोसाइटीज में अगर रिक्वायरमेंट है तो we can conduct such sessions for them as well. You said that we have exceeded the time, but I would say the time well spent. So exceeded is, I mean, I'm at least very benefited. So nice of you. Okay, thank you, sir. And दोबारा रखते हैं राज, so that people who have understood something will understand more. Sure, sir. और अभिनव जी भी वो भी करते हैं, इससे उससे भी इनका भी बहुत जबरदस्त है इक्विटी पे, उसमें ये सब आ जाता है कंसेप्ट. And one more thing to all the participants, Harish sir का ये Magical Mindset group है, please enroll or subscribe to get yourself added to that group. Harish sir will share the details to you. वो group में काफी सारे exercise होती है, गीता अध्ययन होता है, and book reading होता है, so one must attend that also. Okay, so it's over. Yeah. Thank you very much. Bye. Thank you, sir. Well explained, sir. Thank you. Thank all of you for spending your Sunday morning with us and encouraging us. Very true. And very grateful to Harish sir. No. I am so happy that something is, literacy is coming to our group. मैं बोला ना आपने से ऐसा अभिनव ने भी हमारे लिए किया था, वो इक्विटी पे ज्यादा करते, पर इसमें ये सब कंसेप्ट आ गए अल्टीमेटली. So it's so nice, people are getting some benefit out of it. Okay, Yes. man. Thank You, sir. Thank you all. Thank you. Give us your valuable feedback and subscribe to our channel for keep getting good information on this topic.